Good morning, students. In the last class, we had discussed about the Gauss-Jordan method, how to solve Gauss-Jordan method and Gauss elimination method. Now today we will discuss how to find. Now in the last class I have given two problem. दुईटा प्रॉब्लम देथिली से दुईटा प्रॉब्लम गुड़ाए पिला मते करके पठेइचंती ओके एंड सम ऑफ देम आर एब्सोल्युटली राइट एंड सम ऑफ देम लिटिल बिट मिस्टेक अछि तो जहाँ दिया होची तम माने यू शुड गो अहेड विथ द सॉल्यूशंस ओके ओके द फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन लाइक दिस x plus 2y plus 3z is equal to minus 3, then 2x plus 3y plus 2z is equal to 1 and x plus y plus 2z is equal to minus 2. Okay, so the first of all solution, the augmented matrix, is now here it is 1 2 3 minus 3 okay x plus 2y plus 2z sorry and 2 3 this is your z 2 3 1 1 and 1 1 2 minus 2 okay so this is your question where you have to solve and some of the students okay so now we'll start the augmented matrix ए तीनटा 0 करिवा and later ए तीनटा में 0 करिवा so to make it 0 r2 minus 2r1 for r2 and r3 minus r1 for r3 एटा को 2 रे गुणी के इथरु फेडिवा तो 2 minus 2 first of all first no change second 2 minus 2 0 3 एटा को 2 गुणा हिची पिले 2 2 जा 4 3 minus 4 that is minus 1 okay 1 minus 6 minus 5 1 minus of minus 6 that is 7 एटा 1 1 0 1 2 minus 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 that is plus 3 this is 1 okay write down this one so first row dita 0 second row gote 0 hela third row gote 0 hegala okay now we'll go for okay okay now here little bit amaro ide mistake अछि 1 2 2 okay 1 2 2 कले हमें एथरु 2 गुणी के फेडुचे 2 3 1 1 aku 2 गुणा 2 2 के 2 2 दुने 4 2 दुने 4 2 3 के minus 6 now subtract minus 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 plus so it will be 0 3 minus 4 minus 1 okay 1 minus 4 that is minus 3 1 plus 6 7 so 1 2 3 minus 1 0 minus 1 this is minus 3 and 7 okay now right then we'll go for this one 1 1 2 minus 2 aku eita fedibi 1 2 2 minus 3 minus 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 plus 0 minus 1
0. Okay, so it becomes 0. Then minus 2 3, that is 1. Okay, got it. Next what will do, आम या एटा 0 करवा. सो सीधा सीधा आम R2 R3 minus R2 for R3. Okay, so it will be 1 2 3 minus 3. Second row भी change होबनी 0 minus 1 minus 3 7. Third row सीधा सीधा फेड़बी 0 minus 0 0 minus 1, that is plus 1 0. it is 0 plus 3 है जीवो कहीं एटा minus है 3. Then 1 minus of 7, that is minus 6. देखो बिले 8 रू एटा फेडाई 1 minus of 7, that is minus 6. So now what I will do, एटा को 3 रे divide कर देबी. 1 2 3 minus 3 0 minus 1 minus 3 7 0 0 1 minus 2. सो ये ऑलमोस्ट हमरो z रो मूल्य बाहरी गला. बर्तन एटा के 0 करिया. ओके, टू मेक इट 0 आमे एटा को 3 गुणी की r1 minus 3 r3 and r2 plus 3 r3 for r2. Okay, so now here एटा को एटा लिखि दियो. क्वेश्चन टा मुटिके लिभेउची एटी रफ कामटा मु करबी. r1 टा हला हमरो एटा 1 2 3 minus 3 आपु 3 गुणी की फेडबी 0 0 रफ. ओके, 0 0 3 and minus 6. Okay, so what I'll do, so here 1 minus करिबी minus minus plus 1 2 0, that is 3. Okay, 1 2 0 3. then second रे कौन करिबी एटा ऐड करिबी 0 minus 1 minus 3 7 आपको ऐड करिबी. ओके, so what I'll get 0 minus 1 0 7 रू minus 6 गले 1. ओके, so 0 minus 1 0 1 एटा हला 0 0 1 minus 2. ओके, बाकी रहिला एटा गोटे 0 हो गले हमर काम सरला. ओके, ना बे कोन करिवे एटा को 2 गुणी के इथरे मिसेबी r1 plus 2r2 for r1. ए दिटा मिसा 2 गुणी की मिसेबा हला एटा 0 एटा 0. अच्छा एची 2 गुणी की मिसेबी मु. So 2 plus 3, that is 5. Okay, 0 minus 1 0 1 0 0 1 minus 2. So इटा खाली माइनस टा को प्लस कर देले हमर आंसर पड़े आसीबो. So it will be r2 by minus 1 for r2 1 0 0 5 0 1 0 minus 1 0 0 1 minus 2. Therefore x1 is equal to 5, x2 is equal to minus 1, x3 is equal to minus 2. Okay, so this is your final answer. Now you can check it by using your checking method. Students, इटे टिके हमरो मिस्टेक अछि. देखो इथि instead of 2 I put 3. Okay,
देयरफॉर एठी हमर 2 हबो एठी 0 करिया पई 2 और 3 हबो ओके सो मैं कंप्लीट इरेज कर दूची लिसन एठी हमरो मिस्टेक थिला 1 2 2 -3 जगह 1 2 3 मु पके देथली 1 2 2 -3 ओके नाउ हियर इज द क्वेश्चन ता मोर टिके चेंज हे गेथला सो एठी बर्तमान रफ काम रफ so what I'll do here एठी now r1 1 2 2 -3 एठी मुआकू 2 रे गुणिबी 0 0 2 -4 minus plus so it becomes 1 2 0 एठी एला plus 1 so it becomes 1 2 0 1 then eta 0 -1 -3 7 0 0 3 -6 0 -1 0 1 so it becomes 0 -1 0 1 0 0 1 -2 okay now एटा को हमें 0 करिवा so r1 plus 2 into r2 for r1 okay एटा 1 एटा 2 बिसिले 0 0 एटा 2 1 3 0 -1 0 1 0 0 1 -2 now r2 by -1 for r2 so it becomes 1 0 0 3 0 1 0 -1 0 0 1 -2 therefore x1 is equal to your 3 x2 -1 x3 is equal to -2 okay so you have to now check करिया पे हमें कौन करिया तीनटा जाको इक्वेशन मिसई दबा so that हमको जाना पड़ जो तीनटा जाको मिसई दियो x plus 2x plus x that is 4x then y हला 2y 3 5 5 6y then z हला 2 2 4 5z is equal to your minus 3 minus 2 5 that is equal to -4 बर्तन x जगह रे वैल्यू पकई दियो 3 sorry this is your x this is your y this is your z 4 into 3 6 into -1 5 into -2 which becomes 4 3 12 ये आसकरी 10 16 that is -4 therefore the answer is your correct answer is 3 -1 -2 again I am repeating it instead of 2 I put 3 पके की आगो कर देइथिली now एटा बर्तन ए भलिया हबो okay so this is your question number 1 सेमती question number 2 करिया आ गोटे देइथिली मु another question I have given the question is like this okay the question is your x plus 2y plus 3z is equal to 4 x plus y plus z is equal to 3 and 2x plus 2y plus z
is equal to 1. Now the augmented matrix, that is 1 2 3 4 1 1 1 3 2 2 1 1. ओके नाउ हियर एटा को आ एटा को हमको 0 करियो पड़ियो. प्रथमे r1 r2 minus r1 for r2 and r3 minus 2 r1 for r3. ओके सीधा सीधा एटा रो फेडा हबो किंतु एठी 1 2 3 4 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 1 1 minus 3 minus 2 3 minus 4 minus 1 2 minus 2 0 then 2 minus 4 that is minus 2 1 minus 6 minus 5 1 minus 8 that is minus 7. आपको 2 गुणी देली 2 4 6 8 2 ରୁ 2 गले 0 2 ରୁ 4 गले minus 2 2 ରୁ 6 गले minus 5 then 1 ରୁ 8 गले सॉरी 1 ରୁ minus 6 गले minus 5 1 ରୁ minus 8 गले minus 7 then एटा 0 करिया आपको 2 गुणी की now r2 r3 minus 2 r2 for r3. तो फर्स्ट रोटा एज इट इज 1 2 3 4 then second रोटा भी जेम सेमती रहइबो म कहितली that is minus 1. ओके then थर्ड रोटा एटा मु टिके रफ काम कर दोछ 0 minus 2 minus 5 minus 7 आको मु 2 रे गुणिबी 0 minus 2 minus 4 minus 2 minus plus 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 0 0 minus 1 minus 5 0 0 minus 1 minus 5. Okay, now what will do यहाँ करे हमको एक 3टा 0 करियो पड़े. So first of all r1 minus 3 r3 r1 plus 3 r3 कर दो is equal to r1 and r2 minus 2 r3 for r2. ओके एटा लिखा गला क्वेश्चन टा बर्तन एथि हमें देखिया r1 मु रफ काम करती r1 1 2 3 4 एटा को 3 गुणी भी 0 0 minus 3 minus 15 0 1 2 0 minus 11. So it becomes 1 2 0 minus 11. Then second row का मोटा 0 minus 1 minus 2 minus 1 आपको 2 गुणी भी 0 0 minus 2 minus 10 minus minus plus plus 0 minus 1 0 9. So it becomes 0 minus 1 0 9 0 minus 0 0 minus 1 minus 5. Okay, now write down this one. Okay, एबे आउ गोटे स्टेप रहिला ओके बर्तमान एठी ए दुईटा हमरो 0 करिया r1 plus 2 r2 for r1 एटा 2 गुणी के इटरे ऐड कर दवा 1 0 0 एटा 2 गुणा है 18 minus 11 that is 7 0 minus 1 0 9 0 0 minus 1 minus 5. Okay, now see the minus theta अच्छी बर्तमान हटे देले you will get
R2 by minus 1 for R2 and R3 minus 1 for R3. It becomes 1 0 0 7 0 1 0 minus 9 0 0 1 5. Therefore x is equal to 7, y is equal to minus 9 and z is equal to 5. Okay, these are your answer. आपको चेक करिया. For checking आमे लिखि दवा तीनटा जाक इक्वेशन x plus 2y plus 3z is equal to 4, then x plus y plus z is equal to 3, 2x plus 2y plus z is equal to 1, 8, 4x 5y 5z इतनी 7 को 8. LHS 4 into x कहले 7, y कहले minus 9, z कहले 28, 45, 5z plus 25. ओके, सो 25 हेले 25 20 माइनस 28 ରୁ 20 गले 8. दिस इज योर फाइनल आंसर. चेकटा आमे रफ काम रे करबा, आंसर सहित किछि लिंक नाही. फॉर द चेकिंग आमे निजे निजे आंसर टा जानि परिया वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. जेंति मो प्रीवियस केस रे मते जाना पडिला जे समवेयर आई मेक रॉन्ग, चेक कर देले हमरो धरा पड़ी जो वैल्यू पके देले. Okay, so this is all about your Gauss-Jordan method. In this method तुम माने solution कलो. बर्तमान आमे एबे inverse शिखिबा. How to find inverse? Inverse आमे already बाहर करथिले adjoint नै करी. एठी जो आमे inverse बाहर करिबा एटा by using Gauss elimination method. Okay, so हमको जदी find the inverse कहिथिबो तो आमे जे कोनोसी मेथड रे कर दे परिया. बट जदी कहथिबो फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड ताले ए मेथड रे ही हमको करिया को पड़िबो. ओके, गॉट इट हेगला. सो गॉस जॉर्डन बाकी अगेन आई टोल्ड यू दैट तमे सब निजे निजे मन इच्छा नै कि प्रैक्टिस करि परियो इक्वेशंस बा अन्य किछि बुक रो हमें सॉल्यूशन करि परिया. हमर जदी +2 second year book अच्छी, someone has asked that second year book रो exercise अच्छी solve, तो सेटा भी हमें solve कर दे परिया नहीं, हमें निजे निजे equation लिखी की भी कर दे परिया. ओके, सो बर्तमान inverse by Gauss elimination. Okay, so you have to find the inverse. As you know, inverse of a, let A is a matrix. Then B is another matrix. Of same order as of A, and AB is equal to, let it be I. AB टा मन करियो I हैला गुणी लुकरू I कॉल where I is the unit matrix of same order as of A and B. हैला A B सहित identity matrix हेले, then B is the inverse of A, that is A inverse is equal to B, or you can say A is the inverse of
B, that is B inverse is equal to A. Normally आमे एटा नउचे A inverse is equal to B. ओके दाओ एटा हमर जनरल प्रोसीजर रे आमे करथिले तो एठी आमे को करिवा दीटा जो मैट्रिक्स आमे नबा ए बी तो ताको आमे जदी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दबा ताले आमे व्हाट विल गेट दैट मींस मुटिके एटा को लिखि दउची मैथमेटिकली जस्ट राइट डाउन okay now there are two matrices okay there are two matrices that is A is equal to A11 A12 A13 A21, A22, A23, A31, A32, A33 and B is equal to, it is a third order matrix, B is equal to B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 and the identity matrix is your third order 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 तो एज मुझे आरो प्रीवियस लिखतली जे ए बी इज इक्वल टू आई से प्रकार लिखिले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 into B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 is equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, so this is your A, B. So as we know, when you multiply, you will get a पूराटा को हमें एटा से तो मल्टीप्लाई करिया ए पूराटा को एटा से तो मल्टीप्लाई करिया ए पूराटा को एटा से तो मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई करले हमें डिफरेंट वैल्यू पाई परिबा ओके नाउ राइट डाउन दिस वन okay by matrix multiplication we have matrix multiplication हमको जाना अछि हमें सिखिथिले जे एटी पूरा मैट्रिक्स सबु जे को एलिमेंट हमें मल्टीप्लाई करिया नि एटा सहित एटा मल्टीप्लाई करिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 into a column ta B11 B12 B21 B31 is equal to what you will get हमर गोटे कॉलम मैट्रिक्स आसियो सेमती A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 what will get eta B12 B22 B32 is equal to 0 1 0
एंड थर्ड टा मोटे लिखि दूची ओके थर्ड टा पई मते ये दरकार B13 B23 B33 इज इक्वल टू इटा आसो 001 so this is your equation 1 you can say 2 you can say 3 now by applying the Gauss elimination method we'll find the inverse okay मु से इटा मु जनरल प्रोसीजर टा बा हमर थ्योरी पार्ट टा मु कहूची आरो प्रैक्टिकल बा एप्लीकेशन टा मु वेरी नेक्स्ट क्लास रे कहिबी okay so you should remember this is the theory part now applying एबे Gauss elimination method apply हे की हमें जते बेले सॉल्व कर दबा you will get the final answer okay so इठी हमें रखिबा बाकी नेक्स्ट क्लास रे हमें कंटिन्यू करबा okay so this is for today right